Bismillahirrahmanirrahim, and we are starting today's class with the page of vocabulary. The first word is awe. Awe means you might have seen, आपने सुना होगा awful, है ना? Awful, खतरनाक. So awe is the word that means a khawf. Okay. Acclimate, muwafiq. So that thing acclimates to me. Acclimates means it. I mean, that fits with me rather. तो मुवाफकत जो है उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में acclimate. It is mulhid. It is means it is atheistic. Biologist. बायोलॉजिस्ट कहते हैं उस बंदे को जो बायोलॉजी का माहिर हो. हयातियात कहते हैं उर्दू में बायोलॉजी को, जो माहिर हयातियात मीन्स द बायोलॉजिस्ट. ब्रेवरी, ब्रेव से निकला है, बहादुरी. इट इज बोवाइन. यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोवाइन, बोवाइन इज बेसिकली बोवाइन, यू माइट से असल में कली को अगर आपको याद पड़ता हो ना, तो हम एक यूज करते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, समथिंग लाइक दैट, that is known as bovine. So it is bow, झुक जाना. It is bench. Bench is a animal. Bench यहाँ पे उर्दू में लिख लीजिएगा, आपके पास जो आपके पास किताबें हैं यहाँ साथ लिख लीजिएगा. Bench is the animal जिसको बारहसिंगा भी कहते हैं किसी जुबान में. So बारहसिंगा भी इसको कहते थे. तो बारहसिंगा जो है या वो जो animal who has a lot of like that is like a deer, वो बिल्कुल डियर की तरह होता है और उसके सर के ऊपर बहुत से सींग होते हैं. उसको हम जो है ना वो कहते हैं अंग्रेजी में बिंज भी. सो वो झुक जाना. इट इज बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी मींस, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किताबियात. किसी चीज को बुकलेट फॉर्म में जो है ना लिख देना इज नोन एज द बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी मींस किताबियात. सो नाउ आगे चलिए. द नेक्स्ट वर्ड is the beaver. Next thing is the beaver. So now exactly if I tell you, beaver kali ko bolte hain. So beaver is a thing that is known as kali. So now यहाँ पे जब मैं आपको कहता हूँ ना bovine, bovine पे भी यहाँ पे लिख लीजिए अब cattle. So this is bench. Bench means बारहसिंगा and bovine again it is a cattle. So इसके लिखते हैं यहाँ पे cattle. Okay. सो कैटल को तंग करने वाली बीमारी. सो आप इसको बोवाइन की जगह पे यहाँ पे अपने बुक्स में लिख लीजिए अ सॉर्ट ऑफ शुगर फॉर द एनिमल्स. हम जिसको उर्दू में कह रहे होते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, शुगर हो गई हुई है ना जी. तो बोवाइन इज अ स्पेसिफिक डिजीज दैट अफेक्ट्स द कैटल, द एनिमल्स, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ शुगर फॉर द कैटल. ओके. सो बोवाइन के साथ आप लिख लीजिए शुगर फॉर द एनिमल्स. बेंच इज द बारहसिंगा, बो इज झुक जाना, बिब्लियोग्राफी किताबियात. आगे दिया हुआ है द नेक्स्ट वर्ड इज द बीवर. इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी बीवर. सो बीवर इज द वर्ड जिसको उर्दू में अगर हम तलाश करते जाके तो वहां पे भी यही नजर आ गया, यही नजर आएगा स्पेसिफाइड बीवर के नाम से ही होता है. बेसिकली इट इज नॉट बीवर, एक्चुअली अ स्मॉल प्लेस ऑफ वाटर. बीवर स्मॉल प्लेस ऑफ वाटर, इसको हम पॉन्ड कहते हैं ना, जिसमें थोड़ा पानी खड़ा होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज अ सॉर्ट ऑफ 6 फीट बाय 6 फीट. टैंकी होती है, होद सा बना होता है, तालाब छोटा. सो दैट इज नोन एज बीवर. बीवर इज छोटा तालाब. ओके. बाइनरी. सो बाइनरी अंग्रेजी में भी इसको आप जब सर्च करेंगे कहीं पे तो आपको बाइनरी का वर्ड ही नजर आएगा. और बाइनरी को वो बाइनरी ही कहते हैं जब आप इसको उर्दू में इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे. लेकिन एक्चुअली इट डज नॉट मीन्स. बाइनरी मीन्स होता है दोहरा, दुगना. So it is double almost. It is means दोहरा is known as the binary. Two. If you combine two things, we say that it's a binary combination. So binary combination is the word that we use for the two things which are together. So now next one is the benchmark. Benchmark is known as the standard. Benchmark is known as the standard. Boycott is again, the boycott means the strike. It is blowout. Bahar uda. Bahar uda means blowout means something that goes out. Blow out जैसे स्मोक होता है ना, निकल के बाहर निकल जाता है. So something that blows उड़ता है and it goes out, that is known as a blowout. And then bestows, अता करना. हम अक्सर एक सेंटेंस यूज करते हैं, may Allah bestows his blessings on you. अल्लाह आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए. So अता करना मीन नाजिल करना. bestows का मतलब होता है अता करना. And then boyhood, आपका बचपन.
आपका लड़कपन, बचपन से थोड़ा आगे, जो मैंने यंग बॉयज, तो यंग्स आर समवट नोन एज द लड़कपन. एंड देन baffle मीन्स चकरा जाना. सो नाउ I turned into a baffle when I suddenly looked a camel in front of me. मैंने अपने सामने ऊंट को देखा and I turned into a baffle. मुझे चक्कर आ गया. So baffle चकरा जाना. Bind बांधना. Bind means बांधना. आगे चले. बोर्डिंग स्कूल, द स्कूल दैट कंटेन्स एन हॉस्टल. अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बोर्डिंग स्कूल के नाम से ही आ जाएगा इसका मतलब. सो बोर्डिंग स्कूल मीन्स द स्कूल दैट कंटेन्स एन हॉस्टल. जिसके साथ हॉस्टल होता है, दैट इज नोन एज अ बोर्डिंग स्कूल. बैक्टीरिया मीन्स द बैक्टीरिया. बाउंड्री मीन्स हदूद, मीन्स हद. एंड देन बेड साइड. बेड साइड इज नॉट पलंग. डिक्शनरी आपको यही वर्ड दे रही है, but actually the bed side means along with the bed. So if we talk about the side tables, we may name those side tables as the palang beam, the light that goes to the long distance. So the beam is the light that goes to the long distance. Then it is the baseline. Baseline से मुराद होता है वो बुनियाद जहां से हम एक काम को शुरू करेंगे. So baseline is known as वो बुनियाद जहां से हमने शुरू करना है. Crude is the basic form, means खाम. हम कहते हैं crude oil, the basic form of oil, उसको हम कहते हैं crude. And then conscious का मतलब होश नहीं होता. आपको डिक्शनरी अगर होश का वर्ड बताती है, that is a bit wrong word to be actually used. Conscious का मतलब होता है एहतियात पसंद. So I'm very conscious about the health. मैं हेल्थ के बारे में बड़ा संजीदा हूँ. तो कॉन्शियस मीन्स संजीदा होना. सो होश से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अपने पास बुक में लिख लीजिए, संजीदा होना. नेक्स्ट वन इज द कैंपर. वर्ड है कैंप. अब जो कैंप में रहता होगा, जो कैंपिंग कर रहे होते हैं लोग, उन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कैंपर. कैंपर द पीपल हु आर लिविंग इन अ कैंप, हु सेट अप अ कैंप फॉर देमसेल्फ. नेक्स्ट इज द कंफ्यूजन. कंफ्यूजन मीन्स उलझाव. एंड देन इट इज द कॉशन एंड द कॉशनरी. कॉशन मीन्स होता है एहतियात, एंड कॉशनरी एहतियाती. एज एन अ प्रीकॉशन, मैंने बुनियादी एहतियात के तौर पे, प्री पहले, कॉशन बाद में आता है. प्रीकॉशन मीन्स मैंने एहतियात को पहले बुरे कार लाया. इसी तरह से वर्ड निकला है कॉशनरी, एहतियाती तौर पर. कोलेस्ट्रॉल. सिविलाइजेशन, इसको उर्दू में कहते हैं तहजीब. सिविलाइजेशन सुना, इसमें अक्सर वर्ड सुना होगा हमने. इंडस सिविलाइजेशन के आसार मिल गए. सिविलाइजेशन मीन्स कंप्लीट culture, a tradition, or other society that was somewhere कभी हुआ करती थी. आज भी civilization एग्जिस्ट कर रहे हैं. So civilization means तहजीब और तमद्दन. पूरा वर्ड अच्छा ये होगा. It is the contraction. Contraction का मतलब होता है contraction मतलब होता है इकट्ठा करना. So it is, there are two words. It is a contract and expand. दो antonyms हैं. So contract का मतलब होता है इकट्ठा करना, shrink करना चीजों को. Completion मुकम्मल करना. क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन से निकला. सो क्लासिफिकेशन और द क्लासीफाई, चीजों को दर्जाबंदी कर देना, डिवाइड कर. टू डिवाइड समथिंग इज नोन एज द क्लासिफिकेशन. एंड इट इज कोलूजन. कोलूजन का मतलब होता है टकराव, तसादम. सो नाउ कोलूजन, नॉर्मली जब गाड़ियां आपस में टकराती हैं, दो लोगों का आपस में टकराव जो है, दैट इज नोन एज डिबेट. अक्सर एग्जामिनर जो रीडिंग की फिल्म द ब्लैंक्स उसके अंदर इसी से कंफ्यूज करते हैं. So it is not the it is collision. Collision means टकराव, गाड़ियों का आपस में होता है, टक्कर खा जाना. So लोगों का आपस में, that is known as debate. मान जाना, confess, इकरार कर देना. किसी ने गलती मान लिया, हम कहते हैं ये is confessed. Centric का मतलब होता है बुनियादी मरकज़े तवज्जो, मरकूज. And then it is concord. It is concord. It is concord. Concord is the exact word. Concord. Something is telling something from his own side. सारे बच्चे जो है ना वो पढ़ते नहीं है. अब पता नहीं है, कोई इस पे तहकीक भी नहीं किया, लेकिन खुद साख्ता बात, खुद से कुछ कर दिया. इट इज नोन एज कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड. सो कॉनकॉर्ड मींस मन है. इट इज कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी. करिकुलम इज नोन एज द टोटल सिलेबस दैट यू नीड टू कवर, मींस निसाब. इट इज केयर फ्री, जिसको किसी का पता नहीं होता, किसी की परवाह नहीं होती, लापरवाही. इट इज कोलोनिस्ट. कोलोनिस्ट का मतलब होता है कोलोनिस्ट, ये नौ आबादियाती नहीं है. आपको डिक्शनरी नौ आबादियाती बताती है. एक्चुअली कोलोनिस्ट का मतलब होता है एक खास आबादी के अंदर जाके रहना. कोलोनिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे यहाँ कुछ तबके ऐसे हैं जो एक खास मोहल्ले में इकट्ठे रह रहे. हम कहते हैं यार ये मिस्टर ABC एंड फैमिली जो है ना, ये बड़े कोलोनिस्ट हैं, ये सारे का सारा खानदान एक जगह पे इकट्ठा होकर रहता है. दैट इज नोन एज द कोलोनिस्ट. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वर्ड पर पेज नंबर 2. आफ्टर दैट
It is the curriculum हो गया, 9 बाती, it is colonies that has been done. So circulation, circulation है circular से, जो चीज घूम जाती है. So घूमना, circulation, घुमाना, गर्दिश, गर्दिशी भी कहा जाता है sometimes. It is the constitute, constitute, constitution से है तश्कील पाना. Constitute बनाना is basically बनाना और तश्कील देना, इकट्ठा करना. That is known as the constitute. Cowpox, अक्सर आपने नाम सुना होगा, वो ये cowpox is a specific disease. Cowpox एक specific disease है जो आपकी specifically animal cow के नाम से जो animal है उसको लगती है. So cowpox is the name of disease that is specifically for the cows. So the words that we need to cover today in the evening, घर में जिनको revise करना है, those are all accumulate. It is acclimate. It is the aesthetic, biologist, bravery. It is bovine, binge, bow, bibliography, beaver, binary, benchmark, boycott. It is blowout. It is besto. It is boyhood, duffel, buying, and boarding school bacteria boundary. Beside being baseline, is next one is the bourgeon, and then one is a bourgeon. It is exactly means इसको जो आपको bunch of flowers है ना जी कलीज की बात कर, the bourgeon is exactly the same thing. When you talk about the bourgeon, छोटी कलियों को हम कहते हैं bourgeons. And then there is a crude conscious, it is a camper confusion, cautionary, polystole, civilization, contraction, completion, classify, Colian, confess, it is centric, it is concord, consistency, curriculum, carefree, colonist, circular, it is circulation, constitute, and cowpox. इसके अंदर 10 नए words हैं. Out of these all pages, जो मैंने अभी इस पेज के ऊपर almost 100 वर्ड्स को कवर किया, इसमें 10 के करीब नए वर्ड्स हैं जो आपने कॉमन लाइफ में यूज नहीं किए होंगे. तो रात को उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको इसको याद रखने में कोई